recording. Okay, so what we are going to discuss today is what we promised you earlier, and the promise is regarding the understanding of the collocation method. Okay, so this is we'll understand this, and I assume that you have your calculators with you, so that you can actually do your computations as well. Okay, so in a collocation method, the understanding is that we have, okay, so what are given? So the given things in the collocation method is, so what is given? So in a collocation method, it will be given this, I mean, your differential equation will be given. So it could be an nth order differential equation, but for the purposes of this course, we will only concentrate upon the second order differential equations. Okay, so this kind of equation will be given to you. Okay, so d2y by dx square, and you will have got px into dy by dx. Okay, and you'll have qx and into y, and this will be equal to rx. This is usually what is given to you, and with this there are what we call as boundary conditions. So the boundary conditions are, okay, so इसका गलत मतलब मत निकालना. There is BZ means boundary conditions. So what is given is y at x equal to a, it will be given as alpha. Okay, and y at x equal to b, it will be given as beta. So the boundary condition will be given. Along with it, what will be given is this differential equation. And what you have to do is assume a polynomial. So you have to assume a polynomial, which is like, so the method of solving is how to solve. So if I have to talk about how to solve, so if the question is how to solve this, so you can solve this by assuming a polynomial, so which is like y equals to um, a a0 plus a1 x plus a2 x square plus a3 x cube. That is what you have to do for uh, solving this equation, and using these boundary conditions. Okay, so these boundary conditions and the expressions obtained by differentiating this expression y, you want to differentiate this expression y by with respect to x, and you will obtain dy by dx, you will obtain d2y by dx square, and you substitute them into the equation, and then you will obtain the solution by using. So now tell me one thing. I'm just going to ask you one question. So this, is this method, I'm saying the principle is like this. I will repeat again for you, for those people who are joining in late. So what I'm saying is very clear. This is what is given to you. This differential equation is given to you. Okay, this is the differential equation which is given to you. Along with it, the differential equation, these boundary conditions are given to you. You are going to assume a polynomial, a cubic polynomial as a solution. So you are going to assume a cubic polynomial as a solution. And using this cubic polynomial, you are going to calculate dy by dx. You are going to calculate d2y by dx square. Substitute that into this equation, and also use the boundary conditions together with it to solve the differential equation. This is what we have to do. So when I say solve in this particular course, see, in the last course of numerical methods, when I said solve, there was this. Okay, so let us see what it meant in the last course and what it means in this course. When I say solve now, what does it mean? When I say solve now, it means that there is this x equal to a, and we have got x equal to b. When I say solve, it means I get this expression.
I get this expression y equal to a0 plus a1x plus a2x square. I get the value in this expression. I get the values of a0 and a1 plus a2 plus and a3. So I get these values. I get this a0. I get the value of a1. I get the value of a2, and I get the value of a3. Now, obviously, please understand this. This is very clear. This is going to be happening. Obviously, in this polynomial, there are how many unknowns? Can anybody tell me? How many unknowns are there, boss? 3. No, 4 unknowns are there because A0, A1, A2, A3. These are 4 unknowns. If I change the values of A0, A1, A2, and A3, the polynomial will change. We have demonstrated this in the last class. You remember we used GeoGebra. You remember? Yes. So in the last class we have done that, and that is what I am trying to tell you, that if you use these conditions and the differential equation, and of course you substitute the polynomial and its derivatives into the differential equation, you are going to get a solution. So let us suppose we are given a problem and we are going to try to solve this problem. Okay, so सबसे पहले I am going to solve a simpler one, then I am going to give you the difficult one. Okay, so we will solve it together. Don't worry, huh? It's just a simple equation, huh? No problem. Simple method hai. Don't be afraid. It's a very simple method. We are going to solve it. Okay, so let us go to the next page, right? Okay, so in this, what we are trying to do is we are given. Okay, so what is given to me is given. So you have to solve. The question is this. So this is my question. The question is you have to solve this d to y, okay, by dx square minus y equal to x. Okay, and what is given to you in addition to this differential equation? What is given to you? It is given that y, the value of y at x equal to 0 is 0, and also the value of y at x equal to 1 is 0. Okay, is it okay? Is the problem clear to you, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, तो मेरा क्या है, मुझे I have to now attempt to solve the differential equation. So let us try to solve. Okay, so solution. Okay, so now the solution is there. How I have to? So what I have to do is, first of all, in a first step, what I have to do, I have to assume a cubic polynomial. So what do I have to do? I say y equals to, what do I do? बताओ क्या करना है? A0 plus A1 x plus A2 x square. उसके बाद क्या होगा? A3 A3 x square x. क्यूब. पक्का ऐसा ही है ना? Yes. ओके, सो अगर ये ऐसा है, then tell me what is the value of dy by dx. So what I also do is, at the same time, I will say that this is my equation number 1. Okay, so at the same time, now tell me one thing, what is dy by dx? Dy by dx will be equal to a1 A1 plus 2 times a2 2A2x x plus x plus क्या? 3A3 x square. So I will say that this is my equation 2. ठीक है, इसके बाद what do I have? d2y by dx square. Okay, and what do I get?
2a2 a2 plus 6 times 6a3x. 6a3x. बराबर ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ. Yes. Okay, so this is 3, correct? No problem there. बराबर. Yes. अच्छा, now what is given is y at x z equal to 0 is 0. ऐसा दिया हुआ है ना? Okay, so what is given? So given y at x equal to 0 equal to 0, correct है ना? ऐसा दिया हुआ है. तो अगर ऐसा दिया हुआ है, so tell me what is going to happen if y at x equal to 0 is 0, then if I'm going to use this, then tell me what will happen at x equal to 0. Therefore what will happen? Therefore y equal to a0 plus a1 into 0 plus a2 into 0 square plus a3 into 0 cube, and that will be equal to 0, no? 0. Yes. So what does this mean? What does this mean? What is the meaning of this? इसका मतलब डायरेक्टली होता है a0 equal to, a0 equals to 0. okay, so I will put this as equation number 4. All right, is it okay? मैं सही कर रहा हूँ अभी तक तो? Yes, sir. Yes, sir. अभी तक साफ है ना जो भी कर रहा हूँ? Yes, sir. Okay, so now the next step is it is also given that y at x equal to 1 is what? a0 plus a1 into 1 plus a2 into 1 square plus a3 into 1 cube will be equal to what? What is given? At x equal to 1, y is equal to 0. तो ये 0 दिया हुआ है. इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब क्या निकला? इसका मतलब निकला कि a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू 0. 0. ये सही है ना? Now your Yes. a0 is already 0. ये जो पार्ट है, this part is already 0, right? So since a0 is already 0, so I say since a0 equal to 0 already, okay? So then what will happen? a1 plus a2 plus a3, and that will be equal to 0. So now tell me one thing. अब अगर ये मिला तो can I say that my a3 is minus a1 plus a1 plus, ऐसा लिख सकता हूँ मैं? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा लिख सकता हूँ. Okay, fine. Now let us go back and see. Now let us. We have calculated right now. Please see this, that we have calculated my d2y by dx square. We have calculated, okay, and we have calculated dy by dx. Okay, that we have done, and we have also the expression for y. Is this pointer visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Now you see in the differential equation, now substituting this into the differential equation. Now we are going to substitute this thing into the differential equation. So let us see. So now this a3 equal to a1 plus a2, ये जो लिखा हुआ है, this I will put it as equation number how much? This is equation number 5. All right. Now what I'm going to do is next is, so what is my, tell me what is my differential equation? So my differential equation is given. So now I said you're given the dE. Okay, so what is the dE means differential equation? The differential equation is d2y by dx square
plus sorry, it will be minus y equal to x. ऐसा दिया ना डिफरेंशियल इक्वेशन. So what is the expression for d2y by dx square? Can you anybody tell me? What is the expression? X plus y. नहीं यार. 2a2 plus 6a3x. हाँ. 2a2 plus 6a3x. Yes, sir. 2a2 plus 6a3x. a3x. ये है ना अपना. Okay. And then what is y? What is y? a0 plus a1x a0 plus plus a2. a1x plus. ऐसा ही है ना. ऐसा ही है ना. Yes. गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं. हाँ. तो अभी इसका मतलब my a0 is already 0, right? a0 तो लिखने की जरूरत नहीं. a0 is already 0. So what do I have to do? I will write a2. a2x. Not a2. What did I do? So I will write a1 x plus a2 x square plus a3 x cube. यही है ना अपना y का एक्सप्रेशन. Yes. Yes. Okay. And that is equal to x. अब मैं अगर मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूं तो मैं क्या करूंगा? टेल मी नाउ. Same terms. So we are basically going to collect the coefficients for a2. So what this implies. Okay. So what is a2? a2 का multiplication कहाँ से हो रहा है? यहाँ पे क्या है? 2. फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? Minus Minus x one. square. Minus x square. माइनस है. ओके. सो लेट अस सी. तो मैं इसको मिटाता हूँ एंड लेट मी गो बैक हियर एंड व्हाट यू आर सेइंग इज माइनस X square. एक्स स्क्वायर. ओके. फिर उसके बाद प्लस में a1 का क्या है? व्हाट विल हैपन टू Minus a1? x. Minus x. Okay. Then what? Nothing. Nothing. नहीं, उसके बाद कुछ नहीं ना. नहीं No. sir. हाँ बस. और उसके बाद फिर a3. अरे ये क्या हुआ? ये पागल हो जाता बीच बीच में अपना जो डिजिटल बोर्ड है. सो प्लस a3. a3 क्या है? 6 minus x. 6 minus x cube. 6x minus x cube. ठीक है ना? सही बोलो. Yes. Now please see this. Please see one of this that ये जो मेरा इक्वेशन अभी निकाला मैंने, इसका काम कर सकता हूँ क्या मैं? Can I use this? ये जो इक्वेशन Yes, नंबर 5 sir. दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, Can I use this again? Yes, sir. हाँ, तो क्या करूँगा मैं उसको लेके? What do I do if I have to do that? So a3 की जगह minus a1. So what we are going to do is a2 to minus x square, no problem there, plus a1 into minus x, no problem there. But instead of a3, we are going to put a1 plus a2. Correct है? Into 6x minus x cube, and that is equal to. All right. Now you tell me what is the coefficient. What is now totally the coefficient of a1. a1 का coefficient तो minus x है. एक तो ऑलरेडी माइनस एक्स है. उसके बाद क्या आएगा a1 के साथ?
1 minus 6x यस, सो माइनस 6x आएगा, करेक्ट है बिल्कुल। plus x cube. उस पर प्लस एक्स क्यूब आएगा, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। ओके, नाउ व्हाट अबाउट a2? सो a2 ऑलरेडी हैज 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ क्या आएगा? माइनस 6x Plus x cube. plus x cube. Okay, and x. So how many unknowns do we have right now? Initially क्या-क्या था Two unknowns मेरे unknowns. पास? I had got चार. a0, a1, a2, a4. अब मैंने क्या कर लिया? I have reduced my using various calculation. I have reduced my number of unknowns. So now what I'm going to say is, I mean, in the problem, what is additionally given to you now is, so now in the problem, so I'm just, okay, so let me see. So the what is additionally given? Assume. So now say assume in the question. Now let us assume collocation points. Points to be x equal to 0.25. So usually collocation points will be given to you x equal to 0.25 and x equal to 0.5. What do collocation points mean? Collocation points means that the differential equation at this particular point is satisfied from both the sides. That means the left hand side equal to the right hand side. Now please note that since we have substituted the y polynomial into this particular differential equation, this is actually my differential equation. Right now, ये जो अपना yellow में दिख रहा है, this actually is my differential equation. Okay, so let me do this kalakari for you, side. Let me do this kalakari. So this is my, ये जो बना है कलाकार, this exactly is my differential equation. So at the collocation points, the left hand side is going to be exactly equal to the left hand right hand side. So suppose now the collocation point is 0.25. Now you are going to tell me by using calculator, please. यहाँ पे क्या आएगा? You have to substitute 0.25 into this equation and tell me. So what you have to do is, okay, so we'll go back to this blue color. So for x equal to 0.25. Okay, so now what will be this equation for x equal to 0.25? Now tell me, a1 minus 1.73 into 0.25 plus 0.25 क्यूब. सही बोल रहा हूं मैं? गलत तो नहीं बोल रहा मैं? Yes, sir. Plus a2 into 2 minus 0.25 का square minus 6 into 0.25 plus ये क्या हुआ? Plus 0.25 का, and that is equal to, on the right hand side, what is there? It is 0.25. Okay, now tell me what is this? minus 1.73 So minus 1.73. 734. 4 क्या? 7343 43. 7343. Yes, 7343 a1. Okay, plus a2 into कितना? 0.4531. 0.4531 equal to 0.25.
Okay. Is it okay? So we will put this as equation number 7. Okay. So what will happen for x equal to 0.5? What will happen? A1 will be equal to minus 7 into 0.5 plus 0.5 cube, okay, plus A2 into 2 minus 0.5 ka square minus 6 into 0.5 plus 0.5 ka cube, and that is equal to 0.5. So now tell me what is the value? How much into A1? Minus 3.375. Minus 3.35. 375. And that is A1. How much into A2? Minus Minus 1.125. Minus 1 point. ये क्या? Is it like Yes, that? sir. Yes, Yes. sir. And that is equal to 0.5. And this is equation number 8. Now tell me, can you really give me the values of A1 and A2? Using your calculator, please. So you have to solve 7 and 8 together, okay? These 7 and 8 are the, how do you say, the simultaneous equations. Come on, Jaldi. Minus 0.14. Minus 0.1459. 59. And A2 is Minus 6.72 10 to the power minus 3. ऐसा. Yes, sir. Okay, so if this is the case, then what can I say about A3? Can you tell me what is the value of A3? Because पहले से ही मैंने क्या बोला था कि now A3 according to the previous calculations was minus of A1 A1 plus A2. करेक्ट है ना? तो अभी A3 की वैल्यू बताओ. Minus 0.1526. All right. 159. Yes, sir. Yes, Ayya. So therefore, now since your A0 is already 0, so now
Now, please recall that your A0 was already established to be 0. So therefore, so thus the solution. So thus the solution is, क्या बता सकते हो भैया solution के बारे में? Y equals to A0 तो 0 है. So then that will become minus 0.1459 into x. तो उसके बाद माइनस 6.72 into 10 to the power minus 3 x square फिर प्लस माइनस 0.1526 into x. सर A3 पॉजिटिव है सर. A1 की वैल्यू और तो ये A3 पॉजिटिव है ना? हाँ, यस Yes, सर. sir. ये पॉजिटिव होना चाहिए कायदे में. यस. So basically this is to be plus and your A3 has to be plus. Correct है ना? सर हेलो. में A1 की जो कोएफिशिएंट है वो सर एक बार चेक करना पड़ेगा. हाँ करो ना. मेरा ये कहना है कि आप करो बिल्कुल. The point is you have understood how to solve it, right? Yes, ये sir. चेक करना पड़ेगा वाले कोई बात नहीं, उसमें चेक तो करना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं है. So you have understood how to solve it. You can keep on checking again. So let us proceed to the next collocation problem. अपन ready है ना solve करने को? Yes, Yes. sir. Are you ready to solve ना? Yes. Yes, sir. Yes. Okay, fine. So what I am going to do is now give you this problem. The problem is this. So the question is, what you are given is y double prime. You know y double prime क्या होता है पता है ना? Yes, sir. हाँ. ये x square है. Okay, y double prime minus y equal to x square, and your boundary conditions are given as y at x equal to 0 is 0, and y at x equal to 1 is also given as 0. ये दिया हुआ है. All right. So and then you have to use the collocation points. So you have to use collocation points. So you use the collocation points at x equal to 0.25 and x equal to 0.5. So you use these collocation points and we'll solve it. तो आप लोग अपना अपना solve करो, मैं भी solve करता हूँ. So let us see what happens. Solve करो. So you know what to do, no? पहला. So first step, of course, is to you remember that in the answer, what is the first step you have to take? The first step is assume. Assume y equals to Cubic count. Cubic polynomial. okay. Then what will be next step? क्या है? Differentiation.
क्या होगा? 0 0 Are you solving or not? Solving. यहाँ पे सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ. अनुश्री, Yes, sir, solving. Nilofer, are you solving or not? Solving, sir.
ये आया क्या सबका? इतना तक आया क्या सबका? Yes. यस सर. सर इक्वेशन ए अलग आ रहा. अच्छा, क्या आ रहा तुम्हारा? -1.7343 और 0.4531. ओके, हाँ, दैट इज द प्रीवियस वन. ओके, क्योंकि सब सेम ही है ना, बस x की जगह x स्क्वायर की. ये सब सेम कैसे है? तो वहाँ पे एक्स क्यूब की टर्म रहेगी सर. कहाँ पे? सर एक्स सर क्यूब की टर्म लिए ही A3 अपन into x इक्वेशन में. एक मिनट. सर A3 हाँ. into x क्यूब. ये 3 into x³ है. हाँ सर. हाँ, तो a2x हो गया. ओके ओके ओके. ये a2x² होना चाहिए, a3x³ होना चाहिए. हाँ. Okay, okay. That is where I've gone wrong. Okay, fine. Thank you for doing that. Yes, thank you.
तभी मैं सोच रहा हूँ कि ये अलग क्यों हो रहा है. So anyway, so this will become this is going to become a1 x plus a2 x square plus a3 x cube, right? ऐसे है ना? That is equal to x square, right? Is it okay now? Yeah, so now it is okay. A1 into minus 7x plus x cube plus a2 into 2 minus x square minus 6x plus x cube x square for x equal to 0.5. Two minus 0.25 का square minus 6 into 0.25 plus, अरे
यही है. Is it okay? Yes, sir. First equation now. Yes, sir. Correct. Okay, now var x equal to 0.5 equal to, what does it imply? minus 0.063. Zero point 1166. How much? 0 point? 1166. How much it is? फिर चला गया थोड़ा सा.
It will be x, and then it will become 0.06397, and that is x square, and plus 0.1166 x. ओके, ये सोल्यूशन आया क्या सबका? Yes, sir. Yes, sir. What about the others? Yes, sir. Yes, sir. ये किसकी आवाज थी? ये लास्ट वाला किसका आवाज था भाई? Pooja, sir. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 फाइन. सो यू गॉट द मेथड हाउ टू सॉल्व बाय कोलोकेशन मेथड, राइट? ये समझ में आ गया? Yes, sir. Okay, so next is we will study the method of least squares. All right, so next is the method of least squares. So first of all, let us understand the philosophy of the least squares and that what you have to do for least squares method. Okay, so least squares method mean that, and you are so what does least squares method mean? It means the sum of squares of errors is क्या? Is, now this is the part here. That is why it is called the least squares, because the sum of squares of errors is minimum. Okay, so this is what least squares means. So abhi, if you recall your calculus, whenever I had to do मैक्सिमा और मिनिमा, हम लोग क्या करते थे? डू यू रिमेम्बर? बताओ भाई, क्लास 12 का सवाल पूछ रहा हूँ यार. क्लास 12 या पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर, इसमें ये था ना, मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए क्या तरीका था? यू पुट द फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0. यस, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करना है. नाउ if I have multiple variables, we will put the Jacobian to be 0. ठीक है, तो वो जैकोबियन कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता है ऑलरेडी. Okay, so let us see the differential equation first, and then we will talk about what we have to do. So हमको करना क्या है पहले? Let us understand it very clearly. ये जो मेरा differential equation, what is the given differential equation? Usually in the least squares method, we will take the differential equation. We will also of course take the boundary conditions. But मतलब सारा जो खेल है वो differential equation का ही है. So मुझे करना क्या है? Please understand this. So least squares में अब क्या होगा है? Please understand कि suppose for example मेरे पास एक ऐसा लाइन है, ये लाइन है, this is my real number line, and this is my starting point. This starting point is x equal to a. This is my ending point. This ending point is given as x equal to b. And let us suppose that we have a function which I have found out. The function which has been found out by using the differential calculus method or the least squares method. This is the function that is found out. Okay, ये मैंने निकाला है. ये जो polynomial process है ये मैंने निकाला है. And let us suppose that the actual solution is this. This is my actual solution.
ओके, समझ में आया क्या क्वेश्चन है? द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. द रेड ग्राफ इज माई फाउंड आउट solution and the blue graph is in my actual solution. So there is an error between the computed solution and the actual solution. Understood or not understood? Tell me. Yes, sir. So what is going to happen? There is going to be error. Now for every x there is going to be error. यहाँ error है, यहाँ error है, ये error है, यहाँ error है, ये जो error है, ये सारे के सारे errors है. You see this? ये error है. Now can you tell me ये जो error है उसका sign क्या होगा? Let us suppose मैं बोलता हूँ computed माइनस एक्चुअल, ऐसा मैं बोलता हूं, तो साइन क्या होगा भाई इसका? कंप्यूटेड माइनस एक्चुअल का इधर पे साइन क्या है? इस जगह पे पॉजिटिव. हाँ, तो ये जो जगह पे यहाँ पे पॉजिटिव है पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव. यहाँ इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव. करेक्ट है. अब एक बात बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाते क्या कभी कभी? यस सर. हो सकते हैं. तो इसी कारण से मैं क्या करता हूँ, कंप्यूटेड माइनस एक्चुअल का स्क्वायर निकालता हूँ. अब ये स्क्वायर निकाला तो पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ? ये वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. वेदर दिस इनसाइड टर्म इज पॉजिटिव और नेगेटिव, द स्क्वायर इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव. So this particular term, so what I am trying to say is if this particular term which we are going to use, this ये जो term आया ना, ये आया, ये जो term दिख रहा है, इसको अगर minimize करना है, so we will have to compute the minima of this particular thing by equating the derivative to equal to 0. I have to do that. All right, and therefore what I have to do is use the least squares method. So how do I compute the least squares method? Let us understand this. Okay, so we will understand it using the example. So if मैं थोड़ा सा पहले थोड़ा सा ये कर लेता हूँ. तो ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है? मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है d2y by dx स्क्वायर, ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्लस px into dy by dx. Okay, plus qx into y, and that is equal to r. Okay, so this is my given differential equation. Now tell me one thing, in this differential equation अगर मैं जो solution है उसको मैं बिठाऊंगा, suppose I put the solution y equal to a0 plus a1x plus a2x square on that. So now there will be in this particular thing, there will be ये जो मेरा a वाला part है, this part is the what part? This is called LHS. ये LHS क्या होता है? Anybody can tell me LHS? What is LHS? लेफ्ट हैंड साइड. हाँ, ये LHS means left hand side. और ये जो है तुम्हारा RHS का मतलब ये होता है राइट right हैंड. hand. ठीक है. Now this is, since this is a numerical method, the differential equation may not have an exact solution. So there is going to be an error between the left hand side and the right hand side. There is going to be an error. Okay, because this is a numerical method.
So there is going to be an error between the left hand side and the right hand side. So what we do is we calculate what we call as a residue term. So we calculate residue term. Okay. अब रेसिड्यू टर्म अपन कैसे निकालेंगे? सो रेसिड्यू टर्म निकलता कैसे? For residue term, I will say, let us suppose I will use this term called A. Okay, this is my residue term. अच्छा, ये थोड़ा सा अगर मैं गलती से let me put the notation properly because कभी-कभी misleading हो जाता है. Okay. This residue term is nothing but RHS minus LHS का square. This not square, RHS minus LHS. This is the residue term. Now what you have to do is I have to compute the square of the residue term. So I have to compute a new thing which is S, X, and this is nothing but the square of the residue term. So this is the square of the residue term. Now since this is a function, how do I compute the sum of squares? Can anybody tell me? ये तो function है. How do I compute the sum of squares? किसी को अंदाजा? So what I have done is, this is my residue term, this one, this ये जो अपना ये जो part दिख रहा है, this is called residue term, and this is the square of residue, the square of residue. Okay. So this is the square of residue. Now tell me how to find out the sum of squares. So my question very simple is how to find sum of squares. ये कैसे निकालेंगे? Please tell me. बताओ भाई, बहुत सिंपल है. हिंट दूं क्या? हिंट दूं क्या? Should I give you hint? So let us suppose, मैं hint दे रहा हूँ भैया, ये hint दे रहा हूँ. So let us suppose that this is my line. Okay. This is my line and I've got at this line, let us suppose I've got x equal to A, right? And this is x equal to B, no problem there. All right. And there I have, in this, I have a ऐसा, ये मेरे पास एक ऐसा बना है. Okay. ये बना है. And मुझे क्या बोला है कि भाई ये तुम्हारा फंक्शन है. What is this? This is a function. Y equals to fx is given to be a function which is this function. ये जो ग्राफ दिख रहा है ये फंक्शन है मेरा. ऑलराइट. और फिर आपको बोलता है कि भैया एक काम करो, तुम जो है मेरे लिए ये निकाल के दे दो. मुझे क्या निकाल के दे दो? Give me the area under the curve. Can anybody tell me how to do that? कैसे निकलेगा एरिया अंडर द कर्व? कैसे निकलेगा भाई? बताओ भाई. सर इंटीग्रेशन. Integrating.
तो हम क्या करेंगे, बेसिकली वी डिवाइड इट इनटू मल्टीपल, छोटे छोटे स्टेप्स बनाते हैं ना भाई, yes sir, हम छोटे छोटे स्टेप्स बनाते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं इनका, इसका जो एरिया है, फिर इसके जो एरिया है, फिर इसका जो एरिया, इस एरिया का सम निकाल देंगे तो मेरा, and what I will do also, I'll together what I'll do, I will say this particular length, ये जो छोटा सा length है, I will put it as delta x, a small change in x, okay, and then I will say I will sum up all such areas and I will get what you call as the integration of this function. So how the integration of the function is written? Integration of the function is written as a to b, a b f of x, ऐसे लिखते हैं ना अपन, yes ये इंटीग्रेशन फंक्शन into Yes, sir. dx, इंटू टी एक्स है। तो अभी पॉइंट ये है, अभी नाउ लुक एट दिस वेरी केयरफुली, अभी तुम ध्यान से देखना उसको, ये ओके, ये जो मेरा है, दिस इज माय फंक्शन विच इज गिवन एस एक्स इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर। अब इसका सम ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकलेगा? ये जो सम ऑफ स्क्वायर्स लिखा है ना यहाँ पे, ये कैसे निकलेगा? दिस इज द फंक्शन, रिमेंबर, ये मेरा फंक्शन है। In the same way, it is in the same way, I will say integration of a to b, है क्या नहीं? क्या? From a to b and then ऐसा होगा कि नहीं बताओ? yes sir, This, so this will give me, now this will give me the sum of squares, but also remember ये सिर्फ sum of squares तो है नहीं, ये मुझे इसको minimize करना है। I have to minimize this. You understand? मुझे इसको मिनिमाइज करना है। तो अब मिनिमाइज करने के लिए मुझे कौन सा पैरामीटर चाहिए, मुझे कौन कौन से अननोन्स दिए हुए हैं? प्लीज अंडरस्टैंड अगेन, लेट मी गो बैक टू माय असम्पशन। मेरा ये कहना है कि भाई मैं जो पॉलिनोमियल लेने वाला हूँ, इट इज ऑफ गोइंग टू बी ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर विथ a3 x cube, ये मेरा फंक्शन है। ऑलराइट, सो व्हाट आर द वेरिएबल्स इन दिस? कैन एनीबॉडी टेल मी? कौन से वैल्यू को चेंज करने से मेरा फंक्शन चेंज हो जाता है? व्हाट आर द वेरिएबल्स? प्लीज टेल मी। a0 a1 a0 a1 a2। तो अगर मुझे इसको मिनिमाइज करना है, इफ आई हैव टू मिनिमाइज दिस फंक्शन, I have to minimize this with respect to these variables. ये variable इनका, ये इसको, these are my variables with respect to which I have to minimize this. Therefore, if suppose I say that this, मैं क्या बोलता हूँ? Okay, I will say that let this be I. Okay, ये जो मेरा integration है, इसको अपन I बना लेते हैं। And if I have to minimize I with respect to a0, a1, a2, a3, तो मुझे क्या करना चाहिए? प्लीज रिमेंबर, कैलकुलस का सिंपल है, मल्टीवेरिएट कैलकुलस में अपन ने क्या किया था? व्हाट डिड वी डू? आई विल, इफ आई हैव टू मिनिमाइज आई, सो द क्वेश्चन इज टू, द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन? मिनिमाइज आई with respect to what are the things that we have to minimize with respect to a0, a1, a2 and a3? इसके हिसाब से मुझे minimize करना है। If I have to do that, then what I have to do? I have to say del of I
partial of I divided by partial of A0, and I will have to equal it to 0. Also, partial of I with respect to what? A1. I have to equal to 0. 0. Partial of I with respect to A2, I have to equal it to 0. फिर उसके बाद I have to put it equal to 0. If I say minimize with respect to this, I have to find out these equations. ये मुझे निकालना है. Okay? Is it clear? ये समझ में आया क्या? Yes, sir. नहीं समझ में आया तो फिर से पूछो. फिर से बोलता हूं मैं. मयूरी, Yes, sir. क्लियर है कि नहीं? Clear, sir. मुझे लगता है इसने 10 किलो आइसक्रीम खाया है. ये 10 किलो आइसक्रीम कौन खा के आता है? Now please remember our trick. Remember our trick. मेरा trick क्या था? So what was the trick that we had used? Remember, the trick was, so let me write it down again. Trick. मेरा trick क्या था? Use the boundary conditions to reduce number of variables. Okay. This was the trick that we had used in the collocation method. You remember this? Yes, sir. So I am going to use the boundary conditions to reduce the number of variables. So I have already learned a technique wherein if this x0 equal to 0 and x1 equal to 0, I can reduce the number of variables. That is, we can reduce it to a1 and a2, and we will keep on solving. So this is my trick that I have to follow in each of the numerical methods that we are going to do. Okay, so this is the trick that we have. Okay, so let us go to solving the problem now. पहले मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, उसके बाद आप लोगों को वो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम दिया जाएगा और फिर आप उस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. इज इट ओके? Yes, sir. ओके. नाउ यू टेल मी अगेन. हम लोग फिर वापस उसी प्रॉब्लम पे जाएंगे जो प्रॉब्लम अपन ने उससे सॉल्व किया था. ओके, सो व्हाट वाज द गिवन प्रॉब्लम? द गिवन प्रॉब्लम वाज question. Okay, so you are given this y double prime minus y equals to x. ये जो पहला प्रॉब्लम था, and you have got x of sorry, you have got y at x equal to 0, you put it as equal to 1 and not 1, sorry, we put 0 as first, पहले 0 करके करेंगे, फिर y at x equal to 1 we are also going to put it as 0. So what I am also given solve by least squares. Okay, so this is my problem which is given, correct? तो हमको क्या करना है? सबसे पहले we'll assume the solution y equal to a0 plus a1x plus this. We will find out the derivative y double prime. We will find out, and then we'll substitute that into the differential equation. Then we'll find the residual term. Then we'll find the square of the residual term, and then we'll do all the solving. Okay, is the procedure clear? So let us begin the solution. So let us try to solve this.
So solution, and please proceed with me so that there is no confusion. Nilofer, is it okay? Yes, sir. Okay, so fine. So what you have to do is y equals to a0 plus a1 x plus a2 x square plus a3 x cube. Okay, so what will happen to y prime? It will become a1 plus 2 a2x plus 3 a3 x square. ऐसे ही है ना, y double prime equals to what? 2 a2 plus 6 a3 x. सही है? सही लिखा मैंने? Have I written correctly? Yes, sir. Okay, Yes, sir. now what? So now please, you have to use the boundary conditions. So you have to use the boundary conditions. Now please see this. So what using? Now I am saying using y at x equal to 0 equal to 0. So मुझे उससे क्या मिल जाता है? I will not repeat the entire steps. I got that a is equal to 0. Remember? ये from पिछले step से अपन को याद है ना? You have got this. Is it okay? Yes, sir. Okay. So again, using if I use using y at x equal to 1 equal to 0, मुझे दूसरा कंडीशन क्या मिल जाता है? Can you tell me? तो दूसरा कंडीशन मिलता है a3 equals to minus a1 plus a2. ये मिल जाता है ना? Yes, sir. Okay, because the boundary conditions are already computed, it is the same problem we are trying to solve. All right. So now we are going to substitute into the equation. So what is my equation? Y double prime minus y equals to x. So we are going to substitute into the equation and let us see what happens. So what is the expression for y double prime? So I'm saying substituting into dE. So dE is the differential equation. What do I get? What is y double prime? 2a2 2a2 plus 6a3x. Okay. Then what we have got? Minus a1x plus a2x square plus a3 x cube. सही लिख रहा हूं मैं, and that is equal to x, isn't it? So if I am smart enough, what I will do, I will try to collect all the terms, but before let us try to collect all the terms. We have got a1 into minus x, right? Then we have got a2. So a2 में यहाँ पे 2 आ जाएगा, and then you will get minus x square. करेक्ट है? प्लस a3 यहाँ पे क्या आएगा? कैन एनीबॉडी टेल मी? 6x. उसके बाद क्या आएगा मयूरी? क्या क्या आने वाला है इधर? X cube. ओके ओके, सुजाता, नेक्स्ट स्टेप क्या है? A1 and A2 के टर्म्स कलेक्ट करने हैं.
या बट हाउ ये जो मेरा A3 है ना, A3 को मुझे चेंज करना पड़ेगा ना. Yes, sir. Minus of A1 plus A2. Yes, plus A2 into 2 minus x square. Okay, then you have got minus A1 plus A2. All right, and then you have got 6x minus x cube, and that will be equal to x. So what is going to happen here? Tell me. A1 into minus 7x, right? Yes. Plus x cube. सही लिखा मैंने अनुरुद्ध? Yes, sir. हाँ, फिर उसके बाद A2 का क्या होगा बेटा? 2 minus x square 2 minus x square. minus उसके बाद 6x minus plus x 6x plus x ओके, cube. फिर Six प्लस cube. x cube. equals to ओके, x. ये हो गया एंड दैट इज इक्वल टू x. नाउ टेल मी, अब मेरा हाँ, नाउ अप टू यहाँ तक ये जो आया, दिस इज ओके. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कैलकुलेट द रेसिडुअल टर्म. नाउ दिस इज अप टू दिस पॉइंट इट इज सेम. नाउ वी हैव टू डू, नाउ ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट कलर में लिखता हूँ. नाउ हियर it is calculating the residual term. So therefore, so now tell me, how can I calculate the residual term? Can you tell me? The residual term is given as RHS minus LHS. Okay, तो बताओ भैया रेसिडुअल टर्म, या फिर LHS माइनस RHS भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चल सकता है. So my residual term, that is ये वाला टर्म जो है, this is given as how much? A1 into minus 7x plus x cube plus A2 into 2 minus x square minus 6x plus x cube minus x, that is my residual term. तो रेसिडुअल टर्म को क्या किया मैंने, सिर्फ RHS LHS माइनस RHS किया है. हाँ, 10 और कुछ. So therefore the square of the residual term, so square of the, so Sx, the square of the residual term will be what? Can anybody tell me? ये कुछ नहीं भैया, हमको पूरा स्क्वायर इवेल्युएट नहीं करना, प्लीज रिमेंबर दैट. हाँ, स्क्वायर इवेल्युएट नहीं करना है, तो यू जस्ट हैव टू से A1 into minus 7x plus x cube plus A2 into 2 minus x square minus 6x plus x cube minus x, इसका होल स्क्वायर. ठीक है, Yes, sir. तो ये मेरा स्क्वायर का टर्म है. नाउ इफ आई हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ, इफ आई हैव टू फाइंड आउट लीस्ट स्क्वायर्स, व्हाट डू आई हैव टू डू? आई हैव टू इवैल्यूएट. तो फॉर लीस्ट स्क्वायर्स, अरे तुम लोग एक बात बताओ, ये जो व्हाइट ब्लैक बोर्ड अच्छा लगता है कि तुम्हारा ये ब्लैक बोर्ड अच्छा लगता है? Black अच्छा है sir. ये अच्छा है. यही अच्छा है सर. ओके, ये अच्छा है. वेरी वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, फाइन. So now for least squares, what do I have to do? I have to find out this integral. I equals to A to B. A to B मतलब ओके, यहाँ पे A to B नहीं है. मेरा जो बाउंड्री कंडीशन काय पे दिया हुआ है? Can anybody tell? x equals to 0 to x equals to 1. हाँ, तो यहाँ पे what will happen? This will go from 0 to 1 and we are going to say Sx dx. Okay, so I have to find out this integration.
And if I have to remember, if I have to find out the least squares, I have to find out with respect to a1 and a2. I have to differentiate this I with respect to a1 first and differentiate this I with respect to a2 then उसके बाद उन दोनों डेरिवेटिव्स को मुझे इक्वल टू जीरो करना है. नाउ कैन यू प्लीज टेल मी, अब एक ध्यान से देखना, मुझे दोनों को डेरिवेटिव करना, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, सो आई वांट टू डेरिवेटिव, आई वांट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, सो मैं थोड़ा सा दूसरे कलर में लिखता हूँ, आई वांट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आई विथ रिस्पेक्ट टू a1. So partial derivative of I with respect to a1. Okay. Now you please tell me, इसका मतलब ये हुआ, मुझे ये निकालना है partial derivative of this particular expression. ये कैसे निकालेंगे? Can anybody tell me? And similarly, हाँ, ये जहां तक ये लिखा है, इज इट ओके? यहाँ पता, यहाँ तो ठीक लग गया ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes, sir. नाउ मेरा क्वेश्चन ये है कि ये निकालेंगे कैसे बॉस? इसको मुझे जीरो करना है, मतलब ये जो पार्ट है ना, यहाँ मुझे जीरो लगाना है, ये जो पार्ट है मुझे यहाँ जीरो लगाना है, लेकिन ये वाला जो इंटीग्रेशन वाला साइड का है, ये मैं कैसे निकालूंगा? कैन एनीबॉडी टेल मी? सो द मतलब उसमें कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट कि ये चूंकि इंटीग्रेशन है, दिस डिफरेंशिएशन कैन एक्चुअली ट्रैवल इनसाइड द इंटीग्रल. ये जो डिफरेंशिएशन है कैन ट्रैवल इनसाइड द इंटीग्रल. ओके, बिकॉज यहाँ पे a1 है और अंदर जो है वेरिएबल x है, सो इसलिए इट कैन ट्रैवल इनसाइड द इंटीग्रल एंड देयरफॉर I can write this expression as 0 to 1 del a1 s x dx. मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा अनिरुद्ध? Yes. Yes, sir. Sorry. So this can travel, let me see, the differentiation can travel inside the integral, and that is why I can do this. This is basic mathematics and I can do this because of the mathematics here. Okay, ये समझ में आया ये क्या किया? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब मुझे ये पॉइंट, ये इसका, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट आई हैव टू फाइंड आउट, इसका मतलब आई हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू. व्हिच वैल्यू? आई हैव टू फाइंड आउट del by del a1 of s of x. Yes, okay. ये मुझे निकालना पड़ेगा, और अगर मैंने ये निकाल दिया तो मैं इंटीग्रल सॉल्व कर सकता हूँ. मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ बताओ? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे del a by del 1, अभी now what is my sx का expression? now tell me. So please tell me what is the expression for sx. So del by del a1. Okay, तो
स्क्वायर ब्रैकेट हाँ स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसके अंदर क्या हुआ a1 इंटू -7x ऐसा कुछ था, yes plus x cube क्यूब प्लस क्या x cube क्यूब प्लस, हाँ फिर उसके बाद plus प्लस a2 a2, फिर उसके 2 बाद minus x square 2 माइनस x square x स्क्वायर फिर minus माइनस 6x x 6x -6x, plus x उसके बाद cube x cube माइनस x whole square. होल स्क्वायर। ये क्या है, ठीक है। अब Okay. अगेन देखो यहाँ ये अगेन प्लीज सी दिस अगेन, ये जो है ये एक स्क्वायर का एक्सप्रेशन है। तो बिफोर वी सॉल्व दिस, प्लीज लेट अस गो टू अनदर पेज एंड आई जस्ट डू अनदर पेज। तो मैं क्या करूँगा, आप तुमको एक सवाल पूछता हूँ मैं, जस्ट एक सवाल है, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, क्या गोबर हो रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो एक बात बताओ कि अगर मुझे d/dx ऑफ b cos x प्लस a sin x ऐसा टर्म मिला है मुझे, यहाँ पे क्यूब है सपोज, हाउ डू आई सॉल्व दिस? When we know that, suppose I have got d/dx of x cube, if I have to do, this is nothing but 3x square. 3x स्क्वायर तो इसका क्या होगा? तो 3 इंटू फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। पार्शियल डेरिवेटिव क्यों जाना भैया? 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, d by हाँ तो b cos x प्लस a a sin a sin x square x इसका स्क्वायर होल इंटू स्क्वायर समथिंग, हाँ इसका इंटू क्या है? डेरिवेटिव ऑफ b इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, यानी कि यस माइनस बी माइनस sin x साइन एक्स plus प्लस प्लस a cos a a, cos x ऐसे ही कुछ है ना? यस ये डिसएग्री नहीं करते ना, ऐसा ही है ना No. अपना? yes हाँ, तो अगर ये ऐसा है तो हम प्रीवियस पेज में जाएंगे, मान लो अपन प्रीवियस पेज में गए, तो व्हाट विल हैपन हियर यूजिंग द सेम लॉजिक? sir 2 2 into इंटू function into उसका derivative टू इंटू क्या भाई, टू s इंटू of ये अपना, हाँ whole ए function पूरा लिख लो अपना, यस सर तो पूरा लिख लेता हूँ सो दैट वी देयर इज नो प्रॉब्लम। एक्स क्यूब ओके प्लस a2 इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x ओके प्लस एक्स क्यूब, हो गया माइनस माइनस x एक्स, बिल्कुल बराबर हो गया। हाँ फिर इंटू क्या होगा यहाँ पे, एक और derivative of इंटू the आएगा, function माइनस 7x प्लस x क्यूब हाँ तो ये जो बाकी पार्ट है ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई? सर a1 है ही नहीं उसमें ओके वो a1 नहीं है एग्जैक्टली तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तो इसका मतलब बाकी मेरे को मालूम मिलेगा, व्हाट मिलेगा? आई विल गेट -7x प्लस एक्स क्यूब, isn't it? Is it okay? yes यस सर So इसका मतलब क्या हुआ, what do I get here now? Please understand, अगर मैं उसको अभी expand करूंगा, okay, I will put -7x plus x cube inside. So what do I get? 2 into a1 into minus 7x plus x cube
इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर इसका स्क्वायर, हाँ इसका स्क्वायर राइट, प्लस a2 इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स क्यूब इंटू माइनस 7x प्लस एक्स क्यूब. ओके, सर -x फिर माइनस एक्स इंटू माइनस 7x. -7x ओके, अब now suppose for example now I have to integrate this on your calculator. Tell me, अब मुझे इसका ये जो निकला ना, इसको मुझे एक तो पहले इसको जीरो करना है. ओके, मैं इंटीग्रेट करके जीरो करूं कि इसको पहले जीरो करूं, कोई दिक्कत नहीं है. दिस 2 इज अ कॉमन टर्म राइट, ये 2 जो है ये कांस्टेंट टर्म है. yes sir तो आई कैन लीव दिस आउट एंड मैं सिर्फ क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू इवैल्यूएट ओनली द इनसाइड टर्म. ऑलराइट, I leave this 2 out, don't worry about the 2 because I am going to anyway equate it to 0. So the 2 is not equal to 0, so that I'm not going to bother about it. I am bothered about the term which is inside. Now using your calculator, can you evaluate this? Matlab, what do I have to evaluate? I have to evaluate 0 to 1, yes 0 to 1, minus 7x plus x cube का जो स्क्वायर है dx हाँ, ये dx है, इसको एवेल्युएट करो, ये मेरा a1 का कोएफिशिएंट होगा. कैन यू Yes. एवेल्युएट दिस यूजिंग योर कैलकुलेटर? yes sir हाँ करो जरा. -3 हाउ मच? $13.67. 13.67 13.6. yes ए, 7 13.67 6 1 676 2 ऐसे ही कुछ आना चाहिए. yes sir. Okay, so this is the coefficient of a1 in the first equation. अब मेरे को कोई भी this is, so what I'm write coefficient of a1. Now I'm going to write a2. Okay, so again what I'm going to do, 0 to 1. Please help me in solving this, and you are going to do this 2 minus x square minus 6x plus x cube into minus 7x plus x cube. Okay, dx इसका निकालोगे, that will be the coefficient of 6.62 6.62. पूरा बताओ भाई. 62 62 6.62 62 60. ओके, अब मेरा एक और पार्ट बाकी है, दैट मीन्स द RHS पार्ट. So that RHS part, now tell me, this will become 0 to 1 x into other minus x है, so this minus x into
-7x प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, ये वाला जो पार्ट है इसका इंटीग्रेट करके मुझे बताओ भैया कौन है। -3.75. पक्का ना? 75 क्या? आगे बताओ। 0 0. अच्छा, ये हो गया, ये मेरा क्या हो गया? दिस इज माई विच टर्म? This is my first equation. So what is my first equation? Please see what is my first equation. My first equation is like this: 13.6762 A1 plus 6.6262 A2 equals to 3.7500. एक ऐसा टर्म आएगा। Alright? Now let us solve for the second one. So again, please let me know कि मेरा जो Sx का टर्म है वो क्या है. Please let me know. So what we are going to do is we are trying to solve for, we have a shortage of time. So del by del A2 of Sx मतलब क्या होगा? del by del A2 ऑफ ब्रैकेट, हाँ बताओ भैया यहाँ पे क्या है? A1 into -7x प्लस एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब हाँ फिर उसके बाद प्लस a2 A2 प्लस A2 2 minus x square एक्स स्क्वायर minus 6x 6x प्लस एक्स plus क्यूब x cube एक्स क्यूब माइनस x एक्स, माइनस एक्स whole square. इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर सही है? तो Yes. इसका अभी 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 यहाँ पे क्या होने वाला है? अगेन सो दिस विल बिकम 2 2 into, okay, so now you will have this expression, of course you will have this expression A1 into -7x plus x cube, ये तो आएगा ही एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद क्या होगा? A2 into 2 minus x square minus 6x plus x cube, ये किया आएगा। Okay, and then you will have got minus x of course, and then you have got into this thing into what will be the expression? 2 minus x X square Square minus 6x 6x plus x cube. cube. Okay, no problem there. अभी क्या Yes. होगा? अभी इसको अपन खोल देंगे. So now again we are not going to bother about this 2 because ultimately we are going to equate it to 0. 2 is not equal to 0. So I'm only concerned about the inner one. Okay. So मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है. Of course मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है multiplied by this. So मुझे first of all इंटीग्रेशन निकालना है a1 का कोएफिशिएंट. So कोएफ for a1 मुझे उसका इंटीग्रेशन निकालना है. So what do I do? I have to find out 0 to 1. A1 का कोफिशिएंट होगा -7x plus x cube x cube into 2 minus x square minus 6x plus x cube, ये आ गया into dx, ये निकालना है मुझे. Now you tell me how much this is. 6.626 6.6262 ऐसा ही क्या? 62. Yes sir.
So okay, now the next thing is going to be, खत्म हो गया लगता है बोर्ड खत्म हो गया. So anyway, so coefficient of A2 now. So we are going to do 0 to 1. You are going to multiply 2 minus x square minus 6x minus x cube, plus x cube plus x square whole square. and dx. अब म्हणजे 4 कितना हुआ है? 4 4 क्या? yes. Okay, now you have to say RHS. So RHS will be 0 to 1. Now we are going to multiply by minus x into 2 minus x square minus 6x plus x cube dx. बताओ भाई ये क्या है? 1.05. माइनस नहीं है? No sir. Okay, 1.05. 05. Okay, so therefore my equation is सर going to be ऊपर का nothing. भी सर ऊपर का जो फर्स्ट इक्वेशन में RHS की वैल्यू 2.13 आ रही. पक्का? Yes sir. Yes, sir. 2.13 आ रही क्या? इसको मिटाता हूँ, रुको. तो ये माइनस नहीं है? No sir. Okay, fine. So no problem there. So we just say 2.13 here, no problem. And थोड़ा सा मिटा देंगे यहाँ पे. So this is going to be minus 2.13 ना. So in this evaluation you have considered the minus, right? Yes sir. हाँ, तो यहाँ पे minus 2.13 हो जाएगा. Okay, and then you are going to go down and okay, go down here. So how much is 1.05? So therefore मेरा equation क्या हो जाएगा? 6.62 A1, फिर उसके बाद plus 4 into A2, and this will be equal to minus 1.05. Now you solve both these equations, जो ऊपर वाला equation और नीचे वाला equation. Now tell me the values of A1 and A2. बस इतना बता दो मुझे, और A3 का भी वैल्यू बता दो. So अपना ऑलरेडी A0 जो है वो 0 है, A1 जो है वो क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है, ये बताओ मुझे. minus 0.1446. 1450. कौन सा, A1 की A2? A1 A1 is minus 0. minus 1450. 0. A2 is Minus 0.022. A3 is therefore 0.167. okay. Understood how to solve by using least squares? Yes sir. Okay, so very good. So आज का क्लास I guess मतलब मुझे मजा आया पढ़ाने में. Thank you for cooperating. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir. तो मैं जो है तुम लोगों का अटेंडेंस डाउनलोड कर लेता हूँ. अटेंडेंस डाउनलोड हो चुका है मेरे ख्याल से. And thank you for attending this class, and I will stop the meeting. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you sir. Sir.